Rishabh. Hello. Hi Madhu, what's What are up? you? Looks like you're shooting for something. Yeah. You're right. What are you shooting for? We're shooting for some classical video. I don't know what it is. Kushal, what it is? I don't know what we are doing here. It's a multi-camera video shoot. It's a project by the FC College students. He doesn't even know about it, and he actually thought they are going to promote it, and they have a Facebook page and everything. Yeah. What's wrong with you guys? Can't they create a Facebook page? What? Are they going to create one? Are you going to create one? We can do that. We can do that, obviously. And He has a very good number of followers. स्टोरी बताओ चलो। एक्चुअली स्टोरी ऐसी है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से छुप छुप के मिलते हैं, जिसमें मैं बहुत डरी हुई हूँ कि मुझे कोई देख लेगा इससे मिलते टाइम, बट ये ना बेशरम, इसको मिलना ही है। तो अभी कुछ भी करके मुझे घर जाना है और ये छोड़ नहीं रहे, तो वही चल रहा है, थोड़ी नोक झोंक, थोड़ी रूठना, थोड़ा मनाना, थोड़ा रोमांस, ये सब है। बाकी वीडियो देखो भाई, वीडियो में पता ही चलेगा, वो पता चलेगा। बड़ी ट्रीट है हमारी कोरियोग्राफर, बहुत हमें परेशान करती है, ये एक्सप्रेशन दो, वो एक्सप्रेशन दो, ऐसा करो वैसे करो, ये फूल ऐसा ना चाहिए, ये वो। बिल्कुल नहीं, हमारी कोरियोग्राफर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे, बहुत स्वीट है और हमें बहुत अंडरस्टैंडिंगली ले रही है। हमें हर एक जो चीज़ है वो एक्सप्लेन करके बताइए कि ये ऐसा नहीं, ऐसा आएगा, ये एक्सप्रेस करो, ऐसा एक्सप्रेस करो। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी जी जान से मेहनत की हुई अभिनय जो है वो अपने कैमरा के सामने उतार रहे हैं, अभी देखते हैं। एक्चुअली पूरा ही वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रही हूँ मैं, और वैसे नौटंकी करने की बहुत आदत है, पर ये बहुत सोफिस्टिकेटेड नौटंकी कर रही हूँ। हम दोनों नौटंकीबाज हैं। हाँ। एक नंबर नौटंकीबाज। पर सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है जब एंड में वो मुझे पकड़ने जाता है और मैं भाग जाती हूँ, वो वाला पूरा सीक्वेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। I like the first line only. आज जाने की जिद न बस. It's so amazing, like pleading someone, your girlfriend or somebody saying like आज जाने की जिद न बस. So it's so romantic. So it's बेस्ट पार्ट है कि पहली बार कोई मेरे सामने बहुत ज़्यादा झुक रहा है और मैं झुका रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। There are two parts actually. One is during the music, Kushal's music, where they have that kind of posture, portrait kind of pose, and they sit. And then the last part where he catches hold of her and he says, "No, I'm not going to let you go. You go this way, you go that way. I'm not going to let you go." These are my two favorite parts. Okay. I'm proud of myself for choreographing that. When he's stopping her and she yet wants to go, he's In the beginning or the end? the end when he's nodding and saying That's my favorite part. Don't. favorite but गाने का फेवरेट पार्ट मूवमेंट वो है ना वो क्या तुम ही सोचो। हाँ वो Good choice. The dancer is criticizing everybody's choices. That's not fair. पूरा? ऐसा एक लाइन नहीं है जहाँ पे आपको अरे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है? नहीं यार पूरा अच्छा Modest. यार बहुत ही पूरा ज़्यादा अच्छा है, modest. क्योंकि कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी ऐसा गलत नहीं हो रहा है या फिर ऐसा कहीं पे डाउन नहीं हो रहा है, बहुत सी स्टोरी बहुत करेक्ट से जा रही है। I'm feeling great. Actually, this song is "Aaj Jaane Ki Zid Na Karo," the ghazal, has been my dream project. And since the time I've heard the old version, but since the time I heard Kushal's music direction, I was like, okay, I'm going to choreograph on this one for sure. So initially I was going to do it with a female voice, but since the time I heard the male version of it, I was like, okay, fine, let's go for the male one. And accordingly I choreographed it. And there are these two very talented dancers, Avdut and Purva, who have cooperated so well, and within
1 week. Note this, within 1 week, we have completed this, and the entire crew, they are studying in FC college. They are amazing, and they are very sincere, very hardworking, and hope their hard work pays off. और टीम कास्टिंग और सब कुछ इतना मस्त मतलब मस्त है आई रियली लाइक इट मौजो ही मौजो हो गया इतना मस्त है ना आपका टीम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कोरियोग्राफी कैसी लगी, म्यूजिक कैसी लगी? आपने कोरियोग्राफ किया तो अच्छा ही होगा ना। आप लाइट वाली भैया प्लीज आइए ना प्लीज टेक। भैया आपका नाम बताइए। आपको कैसा लग रहा है कि हम ऐसे शूट कर रहे हैं? आपको ये म्यूजिक वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा है। अच्छा Thank you, thank आपकी you. लाइटिंग इतनी अच्छी है, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dada. My crew members are going very good with it. I love the cast, I love the choreographer, I love the entire crew. They're going really good. And so far it's on. We can have the same. Even Kushal and I was discussing the same thing. Like we can come up with some more songs, and we can ask these crew members to come up with some more innovative videos, so that we can have our own YouTube channel and we can We can promote ourselves, promote the and talent promote them also. They are doing a pretty good job. I mean, they are the real heroes behind the song. So, and at such a early age, like they're doing it at such an early age. so I think that's it's really commendable, and of course, it's the effort that in the end that you guys will see. So please watch this video and try to see And what we're promote trying and spread it to. Yeah. as much as you can. For me, my arms they are paining still. I mean, my back arm, the baton arm, is paining a lot, and hopefully we have only two or three more takes to go, so that we have my hand little saved for tomorrow. And for me, it's like I've been into feel since Yes, take and one. he has to feel the entire song. I mean, Yeah, and I'm in the feel since the take one. Yeah. And I just came to know and I've not been shorted. and he's not pretending to sing. He's actually singing the song. When I'm hearing, and it's really cool. And now I know that I didn't make a mistake to take him for the song. It was really good. We were really lucky because the crew had pleaded us to get the singer as soon as possible. पहली बात मुझे शर्माना बिल्कुल नहीं आता, जो मुझे करना पड़ रहा है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, बट हो जाएगा। इसको देख के शर्म नहीं आती कुछ भी, इसलिए आपको कौन सा पार्ट मुश्किल लगा? डांस इतना नहीं लगा, लेकिन एक्चुअली एक चैलेंजिंग है कि हर एक फेज़ में से जाना पड़ रहा है, कि मुझे रुकना भी पड़ रहा है, मुझे उसे मनाना भी पड़ रहा है, मुझे उसे प्यार भी दिखाना पड़ रहा है। तो स्विच होने में ऐसा थोड़ा मुश्किल आ रही है, लेकिन फिर भी कर लेंगे हम लोग। हमारी कोरियोग्राफर करा ली। कोरियोग्राफर पे पूरा कोरियोग्राफर का कॉन्फिडेंस नाम है। तो आपको पता है या नहीं? वो खुद हमारा इंटरव्यू ले रही है। I love the music. मैंने पहली बार सुना है ये गाना पहली बार सुना है। और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिन भर सुनती हूँ ये गाना। कुशल प्लस पॉइंट फॉर यू। बहुत अच्छा है। एक्चुअली अभी के ट्रेंड के हिसाब से मतलब मॉडर्न म्यूज़िक पे भरतनाट्यम ये बहुत कॉमन है एक्चुअली बॉलीवुड पे, पर इतना साइलेंट सॉन्ग पे ये जो स्टोरी एक्चुअली दिखाई है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा लग है। और इवन वॉइस सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उससे इतना ज़्यादा फील आ रहा है करते टाइम, वो फीमेल वॉइस हो या मेल वॉइस हो, उसमें से हम लोग एक्चुअल उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मॉडर्न है और हम लोग क्लासिकल कर रहे हैं तो कैसे एक्सप्रेशन दे या कुछ, बिल्कुल उसमें तकलीफ़ नहीं हो रही है। इनफैक्ट वो पूरी स्टोरी हम लोगों को इमेजिन हो रहा है कि कैसे हम लोग अगर एक्चुअल सिचुएशन में हो तो कैसा होगा या क्या ऑलमोस्ट ये रियल लाइफ स्टोरी है। नहीं ये नहीं। आई थिंक कोरियोग्राफर की होगी, कोरियोग्राफर ने इतना अच्छे से हमें इतना अच्छे से सिखाया। For some reason, Rishabh's voice like fit that fast. I and Kushal were in a fix. Like, where are we going to get another singer? And Rishabh came out like a blessing for us. सब भगवान का किया है। Okay, what do you have We to? love you, Madhu. We love you. We love you. We love you. I love you too, guys. Actually, apparently, this track is liked by so many people.
I was very fortunate to get so many good singers to sing this song for me. We have Niharika who sang it. Then we have, of course, Rishabh. Then we have another guy named Avirup Bhattacharya. He's a Bengali and he sings amazingly well. And then we have the voice of Bangalore, Yamini Santanam, sing this song for us. And I was very, very lucky to get her sing this song. And of course, now we are doing the multi-camera setup video shoot for this song, which of course. Oh my god, that it's you know, I think this track I only removed it, or I had produced it long back, around a year ago, just to have a little practice on the producing, how the 7/8 beats that we have. And in that trial process, I kind of like it so much, it got so much blended into my mind that, you know, I could actually feel and, you know, produce it with the entire string section. And at the exact same time, Rahman sir had done it in MTV Coke Studio, MTV Unplugged, and I felt that it was the perfect, you know, blend which I did, and I feel that him and I had the same kind of redemption that we had to make. So finally it came out, and then many of the people liked the track. Madhu, the entire team liked the track. So I feel really blessed that this track really works so well, and Yeah, it was a very quick question from Kushal on phone, like on WhatsApp, like, are you ready for the song? There's some project going on. So I said randomly, I said yes, because Kushal and me are, you know, are working in some project, like we are trying to get along with we're the trying to timing. work on some experimental music, which probably we wanted to do, but then our timings wouldn't match, you know, because he's that's why. working, I'm working. So So it's really tough. finally we got We got an opportunity by the team. just due to, you know, you guys, you know, you make it possible for us. Like, he approached me and I went to his place, and he lives around like more than 25 kilometers away from my place. But still we did it because it's Yeah. music, and I think dedication of the entire team, you know, dedication of, you know, all the people going behind. I think that will make this song. यूं ही पहलू में बैठे रहूं आज जाने की जिद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी amazing. Music लय भारी, डान्सर्स लय भारी, कोरिओग्राफर भारी आणि कॅमेरामन सुद्धा चांगला असेल असं मी होप करते. म्युझिक व्हिडिओ झाल्यानंतर कळेल. अँड आय विल ट्राय माय बेस्ट. डिरेक्टरचं तर म्हणजे काय सांगू आता, आणि आमचे असिस्टंट्स पण चांगले आहेत, आणि नॅचरली ते त्रास देत आहेत, पण ठीक आहे, तेवढं चालतं. आणि थँक्स फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी. We should thank you. We should thank you because of you guys, because of your assignment, we got the song to get, you know, produced so well. And everyone, your dad loved the song, right? Yeah. Ask her. Yeah, also love this song and really nice, you know. Yeah. Your concept, that Basically, I love the concept. Yeah. Basically, that is amazing. And director is calling us. Yeah. जल्दी करो.